Hello and welcome to a special Z Business show where we find out who gets the A grade amongst B schools. Ask the service sector what is their biggest problem and they'll tell you it's manpower. Ask the retail sector what's their biggest problem and they'll tell you we can't back up to the front which is manpower. Talk to the stock markets and chances are that they'll tell you the largest opportunity lies in education. Talk to the man who's involved in placement and he will also tell you the सबसे ज़्यादा जो दिक्कत उनको आती है वो आती है उनके रॉ मटेरियल यानी कि लोगों की, अच्छे लोगों की, जहां पर बहुत ज़रूरत है और बहुत कमताई है। कहते हैं व्यापार करने के लिए 3 L's की ज़रूरत होती है। L यानी कि लैंड, L यानी कि लेबर और L यानी कि लिक्विडिटी। लैंड मिलता है, महंगा है, लेकिन मिल भी जाता है। लिक्विडिटी यानी कि कैपिटल यानी कि पूंजी महंगी है लेकिन मिल जाती है। लेकिन लेबर महंगी भी है और बहुत कम अच्छी मिलती भी है। It is said for India to become a superpower status, it may just lose its power because of manpower. Manpower in terms of quality, manpower in terms of quantity. And both manpower needs is the unveiling of the power of men. We need good manpower and those who create good manpower. इसी की वजह से हमने एक सर्वेक्षण किया है, एक्सक्लूसिव है जी बिजनेस के सिनोवेट के साथ और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बी स्कूल्स में ए नंबर किसे मिलता है। They say you must be aware of the 4-letter word, but you must be, of course, aware of the 3-letter word. The 3-letter word which always rules the roost. It could be fab, it could be top, but in today's context, it is IIM, and it's always right on top. So let's take a look at who wins and who comes right triumphs on this exclusive Z Business Sinovate B School survey. On the top is IIM Ahmedabad. As always, no questions asked. It's been doing and ruling the roost ever since perhaps its inception. And it's followed by another IIM from Bangalore and another IIM from Calcutta. They call this the ABC of the IIMs, all in that order. It's not alphabetical, but it is still ABC. A for Ahmedabad, B for Bangalore, and C for, of course, Calcutta, and now Kolkata. FMS Delhi comes in at number 4, and of course you have IIM Lucknow there at number 5. You've got XLRI as well coming in, Labour Institute at number 6. You've got a very surprise but entry at number 7 thanks to its global plans, its global footing, and that is IIPM New Delhi. We've also got IIFT of Delhi at number 8, IIM Indore at number 9, and IIM Kozhikode at number 10. That's the top 10 ranking of this exclusive Z Business Sinovate survey. The question, of course, that comes to mind initially, सबसे पहला सवाल जो ज़हन में आता है वो ये है कि IIMA आखिर IIMA क्यों है? What is it that makes IIMA IIMA? And who better to answer that? We've got in our studios, well, from Ahmedabad, Bakul Dholakia, former director of IIMA, who joins us. Thank you, sir, for talking to us. We'd like to ask you the important question, what is it that makes IIMA IIMA? Well, there are several things that make IIMA what it is. The first and foremost is that amongst all management institutes in this part of the world, including other countries in Asia, IIM Ahmedabad has the largest pool of multidisciplinary faculty. We have 84 of them full-time faculty and another 30 to 35 visiting faculty. Now, all these 85 are highly qualified, specialists in their respective fields, have tremendous research credentials, and in fact, they are the ones who are invited by international agencies to also participate in various kinds of groups. In addition to this, of course, IIM Ahmedabad
follows the case method of instruction to its core. I mean, case method every business school follows, but it is the depth, intensity and range of cases that you discuss that really matters. The third thing is that IIM Ahmedabad has been in the forefront of developing relevant and contextual teaching material with Indian backdrop, and that is what our faculty has been engaged in. We have prepared more than 3,000 cases, and our faculty have written a textbook in practically every conceivable field of management. And these are the materials which are used by other business schools. Right, so you say three issues are critical for your success. One, of course, is the faculty. Second is the depth of what you teach. And the third is the relevance of what you teach. The three areas where you say is the reason what makes IIM. And one more, and yes. one more thing which I missed is that we continuously innovate. In fact, at any given point of time, we offer about 70 plus elective courses in the second year. And 1/3 of these courses have been developed in the previous 2 to 3 years. So every 3 years, substantial part of the course package keeps changing. So what you're saying is it's dynamic and it's up to the times. I've got with me an old friend, and of course Arindam Chaudhuri, Dean of IIPM, right out here, and a popular face, must I add, on television and otherwise. Arindam, they say that IIM is a brand now and nothing more than that. Do you agree? It is a brand. It is the oldest B school. It's got all the support that a B school could ever dream of. And is that the reason, the only reason why it's a number one? Not at all, not at all, of course not. It provides great education, and as Professor Dholakia was rightly saying, that it's got some of the best faculty out there. They've written books in all possible subjects, as he rightly said. So everything put together. But I think B school is that area of education where interestingly, what you teach often doesn't give you that aura than how good your students are placed, you know. Right. And IIM Ahmedabad students have constantly been extremely well placed. Right. And that makes the big difference, you know. Of course, the education is good, but the placement has really made It's absolutely fantastic, which is where really the brand value comes in and the recognition comes in. Let's, when you talk about placement, how can you not talk to Sanjeev Bikhchandani, who's better known as Mr. Naukri.com, who made it his job to ensure that everybody gets a job. Sanjeev, nice of you to join us on this very special show. Of course, the relevance of IIMA would not be that much on Naukri.com because I don't think anybody from IIMA would want or would require to go to Naukri.com. Well, actually, we've got about 700 IIM alumni who are registered with us. So, but anyway, but yeah, carry on. Yeah, so do you think that they'd be required to do that, given what Arindam, Professor Chaudhuri just said, and of course also what Professor Dholakia just said, that the brand itself is so big and the placement is already there. You don't have to go and seek them. They're the ones who picked up absolutely at the top, creme de la creme. Well, a brand is not created out of a vacuum. Okay, so if a brand exists and it has sustained over so many years, it's obviously because the products are very, very good. And the product's not good by accident. Professor Dholakia has mentioned a number of reasons why he believes IIMA is number one and remains number one. Well, I would say there are three things. One is the people, which is the faculty and the students. The second is the work ethic. You know, I have never seen, although I'm an alumnus of IIM Ahmedabad myself, so maybe I'm a little biased, but I have never seen any other system where people are so committed and work so hard. And the third thing is the pedagogy, the case method, the way things are taught, the courses, and so on. Now, when you say people work so hard, I mean, is that a reflection of the way the selection procedure is adopted to get people into IIMA, because there is a commonality of the way people just are, and that's the reason why they get into IIMA? Well, definitely you need to have exhibited a very high degree of academic commitment and performance to even qualify for the get into the interview.
And beyond that, obviously, they look at other things. But I think there's a minimum cutoff of academics where, 99 percentile in the CAT is what is required to be called for an interview at IIM Ahmedabad. Right. And subsequently, the way you're made to apply yourself, the system pushes you. You are obviously a self-starter yourself. That's how you got in. So the 2 years that you're there, you work really hard. And I think that makes a big difference. Right. Working hard. I mean, I see a smile on your face, Professor Chaudhuri. Why is that? No, I mean, of course, the people must be very passionate there, and they must be working very hard. But if somebody hasn't gone to any other B school, he doesn't have a clue about what's happening there. Right. And also, a fact is that when one B school has been very well established, and year after year, their placements have been very good. So there tends to be a bias in the mind of the recruiter that this is the only B school which is providing good quality students. But that necessarily needn't be a fact. And times are going to change, and in the new time, there would be new B schools which will come up, which will provide great quality education as well, which is going to have very dedicated people, very passionate, very hardworking students as well. And what has been a trend over the last 30 years, of course, is because of their very high quality students, but that trend need not remain like that for the next 30 years, because there would be, I'm sure, many other institutes coming up giving good quality. Oh, absolutely. I think if it doesn't come up, we're going to be in serious trouble given the awesome gap between demand and supply. The question, of course, which we must address at this point of time is when we actually allocate or give a position to a particular institution, there has to be a rationale. There have to be several reasons for that. One reason, of course, is infrastructure. We'll question that. Is it all about size, and does size really matter more so in a virtual world? In just a moment, we'll return. Welcome back. You're watching on Zee Business, a very exclusive survey on the best B school in the country. It's an exercise that hasn't been done before, at least in television. This is the first time it's happening. And we've got with us a very, very special faculty to talk to us about it and tell us what is it that makes the big school the big one. We've got with us in our studios right out here, Professor Arindam Chaudhuri, Dean of IIPM. In Ahmedabad, we've got Professor Bakul Dholakia, former director of IIM Ahmedabad, and of course the popular face of Sanjeev Bikhchandani, founder and CEO Info Edge. We are trying to find out what is it that makes the IIMs the IIMs. We've got a variety of reasons that have been spelt out by the three professors, the two professors and of course Sanjeev who are sitting with us. But we have to take and address each point by point. And of course the point one on our list is infrastructure and how crucial that is. Let's take a look at what our survey really unfolds when it comes to infrastructure. Well, it's not very different when it comes to the positions. IIM A is right up there on number 1. Number 2 पर है IIM Bangalore. Number 3 पर है एक बार फिर से IIM कोलकाता. Number 4 पर IIM इंदौर. नंबर 5 पे है IIM लखनऊ, यानी कि सारे के सारे पांचों के पांचों जो पहले स्थान हैं IIM ने ले लिए हैं. और उसके बाद FMS दिल्ली का नंबर आता है नंबर 6 पर. XLRI जो है नंबर 7 पर. IIFT जो है दिल्ली का वो नंबर 8 पर है. नंबर 9 पर SP जैन मुंबई और नंबर 10 पर है IIM कोझिकोड. प्रोफेसर साहब ये बताइए बकुल जी कि आपके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी अहमियत कितनी है एक इंस्टीट्यूशन में इस वक्त जो है बी स्कूल्स में, खासकर ऐसे समय में जब जमीन और जायदाद इतना महंगा हो गया है कि कोई भी आम आदमी यदि एक इंस्टीट्यूशन को बनाना चाहे तो उसके लिए महज एक सपना रह चुका है. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत काफी है, पर एक बात को हमें समझनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक एलिमेंट ऑफ कंपटीशन वो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मैटर ऑफ रिसोर्सेस एंड कैन बी रेप्लिकेटेड.
since technology keeps changing, the more recent institutes in fact will have an edge in terms of creating better infrastructure. जी हाँ. Upgrading existing infrastructure is a bigger challenge than creating a new infrastructure. सही बात है. But let us understand that infrastructure is only one component of the matter. अगर आपके स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है, आपके फैकल्टी अच्छे नहीं है, आपका करिकुलम अच्छा नहीं है, right, और क्लासरूम में फैकल्टी और स्टूडेंट की कमिटमेंट नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता. Right. Also joining us in the debate is Professor Ashish Bhattacharya of IIM Kolkata. Thank you, Professor, for joining us from Kolkata itself. It's an interesting point, Arindam, which is brought about by Professor Dholakia. And one would have actually thought that maybe the new institutes, जिसके पास नई तकनीक होती, उनके पास तो एक बुनियादी ढांचा जिसे कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बेहतर होना चाहिए पुरानी इंस्टीट्यूट से, लेकिन ऐसा नहीं जो ये सर्वे रिवील करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो नई इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हाई वेटेज आ जाता है जमीन कितना है, तो ये जमीन ज्यादा मिलना तो बहुत मुश्किल है. और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो एक बहुत बड़ा डिबेट है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है. मतलब ये तो नहीं कि 100 एकड़ जमीन है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और क्योंकि 2 एकड़ जमीन है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. तो जैसे ढोलकिया साहब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना चाहिए उतना तो एक नई इंस्टीट्यूट भी क्रिएट कर सकती है और शायद उससे अच्छा भी क्रिएट कर सकती है, जितना स्टूडेंट्स को चाहिए हो. लेकिन जो अहम बात है वो है कि यहाँ पे कोर्स कंटेंट कैसा है, जो फैकल्टी है वो कितना अच्छा एक्सपोज्ड है दुनिया से, इंडस्ट्री से, कितना अच्छा पढ़ाने का तकनीक आता है उनको. क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं लेकिन आप पढ़ाते कितना अच्छा है. आप जब बात कर रहे हैं तो आपके क्लास में जो आखिरी बच्चा बैठा हुआ है वो क्या उतना ही अच्छा समझ रहा है जितना आपके एकदम सामने वाला बच्चा बैठा हुआ है. आप जो कह रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कितने अच्छे टीचर्स हैं, सही बात है, कितना अच्छा कोर्स कंटेंट है. सबसे पहला जो मुद्दा उठाया जमीनी तौर का, यानी जमीन की जो एक तरीके से आपने बताया कि इतनी महंगी हो गई है तो बहुत ज्यादा विशाल इंस्टीट्यूट खोलना एक तरीके से शायद, क्योंकि एक व्यापार है, ये भी एक व्यापार है, शिक्षा भी एक व्यापार है, ऐसे ना भूलें. समाज सेवा नहीं है, व्यापार है. और व्यापार के तौर पर जो है कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमीज जो है आपके कामकाज नहीं करते, खासकर आज जो रियल एस्टेट का दाम है. लेकिन सवाल है कि आज के वर्चुअल वर्ल्ड में रियल एस्टेट या बहुत बड़े इंस्टीट्यूट या साइज की इतनी अहमियत है या फिर नहीं. संजीव, जरा इस पर आपकी राय चाहेंगे, खासकर क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड से आपका बड़ा करीबी से रिश्ता है. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर टू माय माइंड इज मोर बैकग्राउंड म्यूजिक, इट्स टेपेस्ट्री, इट्स अ नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट. इट नीड्स टू बी देयर. लेकिन the single most important thing is the people, the faculty and the students, and how good they are, how committed they are. Also the methodology, pedagogy, the way of teaching, the interaction between students, learning from peers. ये चीज़ नहीं भूलिए कि in my opinion 80% of the value of an MBA program comes not from the professors and the students interacting, but from the students working together, interacting with each other. 80% is outside the classroom, only 20% is inside the classroom. So I think quality of peer group and quality of professors is the single most important thing. In that same breath, what is it that attracts that quality, that particular quality and the consistent quality only to IIMA? Professor Dholakia, can you answer that? Well, I think the first and foremost thing is the kind of opportunities that the faculty get for international exposure, for wide range of consulting assignments and interaction with executives through a series of executive programs that we offer, and the top level people come there. Secondly, when your colleagues are highly respected in the profession, the quality of working together and working in teams also improves. And we have almost 50 plus collaborations with most reputed universities the world over. So faculty exchange program opportunities are also across the globe. We also get about 100 international students in our exchange program. And therefore opportunity to teach foreign students is also very large in IIM Ahmedabad. So you have a whole lot of factors. Plus working environment is extremely good.
Our library is amongst the best that you can get, and we are not a resource-starved institute, and therefore the faculty gets a lot of resources to do their research, and to purchase databases. We are never worried about the financial resources. Well, thank you so much, Professor, for joining us. And of course, you touched upon the very important point of the environment, of the overseas factor, particularly in today's global world. A world where, well, the globe is on the trot, and we'll go globe-trotting in just a moment. Welcome back to Z Business, and an exclusive show where we are ranking the B schools of this country. A survey that's been done in association with Sinovate is the first of its kind on Indian television. The results, of course, have been quite a surprise in certain categories, but well, across the board, the overall ranks IIM A number 1, IIM B number 2, IIM C at number 3. But we've been taking issues because that's what really makes an institute. Various issues. Now, of course, in this segment, we come across the critical issue of nationality and transnationality. Globe-trotting is what we call it. And of course, the rational in today's global world can lesser be emphasized. And out here, well, perhaps, I wouldn't say it's a surprise, but our number 1 is IIPM. One of the first times we don't have an IIM on number 1. Number 2, IIM Ahmedabad. Number 3, IIM Bangalore. Number 4, IIM Kolkata. And number 5 is IIM Indore. Number 6, we've got IIFT Delhi. Number 7, IIM Lucknow. Number 8, FMS Delhi. Number 9, XLRI. And number 10, IIM Kozhikode. Let's go on to number 1. And there is, of course, a reason why Professor Arindam Chaudhuri is beaming. What is it that would make you number 1 in global exposure? When this globalization buzz started, and as you see rank after rank, year after year, the IIMs are 1, 2, 3, 4, 5. Ever since the 5th and 6th came up, 5, 6, and tomorrow more will come up. They'll be there again. We thought the only way we could create the big edge and make people realize that, look at us. Because we were giving excellent course. The contents was superb. The teaching was absolutely brilliant. All the good things that you could expect out of a B school. But you had to create that niche. And we concentrated on globalization. So, if the IIMs have about 100 tie-ups, I can't even count the number of tie-ups that we forged over the last 5-7 years. I mean, I would say hundreds. So, be it companies across the globe where about 3,500 of our students every year are going. So every student of IIPM is going abroad, visiting best of companies. If they go to Japan, they're going to Toyota, Honda. If they're going to Germany, they're going to, Mercedes. If they're going to US, they're going to the top companies there. France, they're going to top companies. Right. Similarly, the institutions. Sure. Whenever they go, abroad, they're having classes inside the top B schools in the world. So it's IMD Lausanne, for example, where students have had classes inside their campus, and the kind of exposure that they get really makes them world fit. Yeah. Let's go across to Kolkata. Sir, Ashish Bhattacharya of IIM Kolkata is right here with us. Professor, are you surprised by what this survey has unveiled in terms of global exposure? I can't say that I am surprised. But at the same time, what I find is that just global exposure number 1 and then going down does not tell a great story all about. But I agree with Professor Chaudhuri that once you give your students foreign exposure, it is a very, very good exposure that you are looking forward to. For example, in IIMs, we have exchange programs, and large number of students every year go outside the country, and there are foreign students who come here for 1 term. And this exposure is absolutely great. And therefore, to that extent, I agree with Professor Chaudhuri that exposure is very important. So, when we talk about globalization, then it is not only the giving exposure to your students, but exchange program for the faculty, where the
you can join hands with other faculty in the foreign university for research, and also in your classroom, not only for one term, for the whole 2-year program, how many foreign students you are getting in. So I think these all need to be counted when we talk about the global exposure. But I congratulate Professor Chaudhuri for being number one in global exposure. Right. Sanjeev, would you like to add to that and the relevance of global exposure? Do you think that the non-IIM schools like IIPM were a little more foresighted, if I could say that? No, I'd like to congratulate Professor Chaudhuri for the achievement and even for the 7th rank. I don't really know enough about exactly what happens at IIPM to really comment whether I'm surprised or not, but I'd like to congratulate him, and I think it's a great achievement. Fantastic, great achievement, of course, for IIMPM. But that's only one, as what Professor Bhattacharya was saying. That's one issue out of several. What are the other issues? Well, we'll put everybody in their place with placements in the next segment. आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश। हालांकि जी बिजनेस पर हर पेशकश खास ही होती है, लेकिन ये कुछ अलग खास है। खास इसलिए कि 20 स्कूल का सर्वेक्षण किया गया है सिनोवेट के संग मिलकर। पहली बार भारतीय टेलीविजन में आपके सामने ये पेश हो रहा है। हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एक 20 स्कूल को एक सबसे बढ़िया 20 स्कूल क्यों बनाया जाता है। अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा है प्लेसमेंट का, कि ये कहते हैं कि शिक्षा तो अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन चाकरी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। इट्स टाइम टू पुट इन प्लेस द रेलेवेंस ऑफ प्लेसमेंट्स। तो आइए देखते हैं कि प्लेसमेंट्स के हिसाब से ये सर्वेक्षण क्या कहता है, किसको अव्वल नंबर दिया जाता है। और यहां पर एक बार फिर से नंबर 1 पर है IIM अहमदाबाद, नंबर 2 पर IIM बैंगलोर, नंबर 3 पर IIM कोलकाता, नंबर 4 पर XLRI, नंबर 5 FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नई दिल्ली। उसके बाद IIM इंदौर है, नंबर 6 पर IIM लखनऊ, IIFT दिल्ली, IIPM और साथ साथ IIM कोझिकोड, जो लगातार निरंतर नंबर 10 पर है। हमारे साथ प्रोफेसर अरिंदम चौधरी हैं, साथ साथ जो है संजीव बिगचंदानी है जी हैं नौकरी.com के जुड़े हैं हमारे साथ। के गोपाल साहब ED OMAM कंसल्टेंट्स के हमारे साथ दिल्ली के स्टूडियोज में, और कोलकाता से हैं प्रोफेसर आशीष भट्टाचार्य साहब, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ साथ डॉक्टर OP गुप्ता साहब भी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर ICFAI स्कूल्स, और जो हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गोपाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे आलम में जब जो है मांग और आपूर्ति में कोई तालमेल नहीं, मांग बहुत ज्यादा है, आपूर्ति बड़ा कम है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, ऐसे आलम में आदमी सोचता है कि हर एक को नौकरी मिल जानी चाहिए। तो प्लेसमेंट्स की ऐसे वक्त में कितनी अहमियत है? प्लेसमेंट्स तो वैसे आप सही कह रहे हैं कि सबको मिल ही जाता है। द पॉइंट इज ओनली अ गुड जॉब, एंड द गुड इज अ वेरी रिलेटिव टर्म। एवरीबडी गेट्स अ राइट जॉब डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट ही वांट्स। अब ये देखना ये है कि कैंडिडेट क्या चाहता है, जो वो चाहता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ द ब्रांड इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन। ये बताइए डॉक्टर OP गुप्ता जी, आपके हिसाब से एक इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट की कितनी अहमियत हो जानी चाहिए, या एक डिवाइडिंग लाइन होनी चाहिए भी? इंस्टीट्यूट का मतलब है शिक्षा प्रदान करना, प्लेसमेंट का जरिया जो है एक इकोनॉमिक टर्न है जो कहीं ना कहीं किसी और के जिम्मे होना चाहिए। ऐसा है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है कि प्लेसमेंट किसी भी 20 स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और आज जो भी बच्चा 20 स्कूल में आ रहा है वो यही मान के आ रहा है कि उसको 20 स्कूल अच्छा प्लेसमेंट दिलवा देगी। पहला कंसर्न किसी भी बच्चे का 20 स्कूल में अच्छी जॉब का है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है बिजनेस स्कूल्स का इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ही है। शिक्षा अपनी जगह है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, but at the same time most important is whether the B schools is able to provide good placements to its candidates. And in fact, in my opinion, the distinguishing factor is placements.
प्रोफेसर साहब, जब आप किसी को किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें दो राय नहीं कि आप उनको कहते हैं कि भैया आप उनकी अच्छी तरीके से प्लेसमेंट कर दें। क्या प्लेसमेंट आपका जिम्मा है कि नहीं? आपका जिम्मा होना चाहिए शिक्षा। आपकी शिक्षा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि प्लेसमेंट खुद ब खुद जो है आपके दरवाजे पर आ जानी चाहिए। मानते हैं? देखिए, पहले 25 साल IIPM का जो रहा उस पर हम सिर्फ शिक्षा पे ही कंसंट्रेट करते रहे, क्योंकि कंपटीशन भी नहीं था, ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे, उनको प्लेसमेंट आराम से मिल जाता था। लेकिन अब जब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने शुरू में ही कहा था बी स्कूल्स का ये है, आप अगर शांति निकेतन में पढ़ने जाए, कोई ये नहीं पूछता भाई तुम्हें प्लेसमेंट कैसा मिला। 5,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन लोग इतने प्राउड फील करते हैं कि शांति निकेतन के प्रोडक्ट हैं और पढ़ाई पे ध्यान है। और ऐसा ही एक शिक्षा के जगह में होना चाहिए, आपको पढ़ाई कैसा मिला, एनवायरनमेंट में कैसा था। लेकिन बी स्कूल एक ऐसा दुनिया है जहां पे शिक्षा तो इंपॉर्टेंट है और प्लेसमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट उसी हिसाब से एक बी स्कूल ज्वाइन करते हैं। इसलिए एक बी स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि जो आप स्टूडेंट्स ले रहे हो उनको अच्छी तरह से प्लेस कर पा रहे हो या नहीं। और इसी पे हमने मतलब लास्ट कुछ सालों से बहुत फोकस किया। और जैसा शायद आपको पता हो कि इस साल IIMs के बाद जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हैं IIPM का सबसे ज्यादा रहा। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर भट्टाचार्य साहब, कोलकाता से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके बताइए कि आपके हिसाब से क्या उतनी अहमियत देनी चाहिए प्लेसमेंट को जितनी एजुकेशन को या शिक्षा को? देखिए, बिल्कुल देनी चाहिए। मुझे लगता है जब हम मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करते हैं तो जो लड़के यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो वो नेचुरली नौकरी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम है। यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। हमारा फेलो प्रोग्राम अवश्य रिसर्च ओरिएंटेड है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई फोकस रहता है। वहाँ पे वोकेशनल कोर्स में अगर जाते हैं प्लेसमेंट की बात होती है। और दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट जो है हाथ पकड़ के कंपनीज को नहीं ला सकती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, अगर आपके बच्चे अच्छे हों, आपकी शिक्षा अच्छी हो और उनको आप अच्छी तरह से तैयार करें तो कंपनीज खुदम खुद आती है। हमें जानना चाहिए जब इंस्टीट्यूट्स इतने सालों से रहती है तो जो कंपनीज के तजुर्बे हैं कि छात्र कैसे करते हैं, वहाँ जाके कैसे मैनेजर वो बन पाते हैं, उसके आधार पर ही वो जो है कैंपस विजिट करती है। तो मुझे ये लगता है कि एक मैनेजमेंट स्कूल में प्लेसमेंट की उतनी अहमियत होनी चाहिए जितनी कि शिक्षा की हो। लेकिन शिक्षक होने के नाते प्लेसमेंट पे शिक्षक का ध्यान उतना नहीं होना चाहिए। उनका ध्यान रिसर्च पे होना चाहिए। उनका ध्यान होना चाहिए कि कैसे जो कंटेम्पोरेरी इश्यूज हैं उसको क्लासरूम में ले आए और बच्चे को इतना अच्छा बना दे कि जो कंपनीज है खुदम खुद आए और बच्चे को सिलेक्ट करके ले जाए। लेकिन अहमियत होनी चाहिए प्लेसमेंट की। चलिए, प्लेसमेंट की अपनी अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोफेसर साहब, अरिंदम साहब हमसे जुड़े एक अहम कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेसमेंट की अपनी अहमियत है, लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं कि कोर्स की अहमियत नहीं? कैसे कह सकते हैं? कोर्स की अहमियत है। ऑफ कोर्स द कोर्स हैज टू बी ऑन कोर्स। आफ्टर द ब्रेक वील टेक अ कोर्स। You're watching Z Business, our special on B School, the survey done with association with Sinovate, where we're trying to find out who is the best B school in the country. And the survey reveals the top three are, well, with no surprise, the IIMs. IIM A, IIM B and IIMC. अलग-अलग विषय हैं जिस पर इसे रैंक किया गया है। अलग-अलग विषयों पर हमने चर्चा की है। अब समय है असलियत की, शिक्षा की। कितने शिक्षित हैं और शिक्षा पर कितनी अहमियत दी जा रही है, यानी कि कोर्स कंटेंट पर। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में हैं यहां पर दिल्ली में के गोपाल साहब, ईडी ओमैम कंसल्टेंट्स, साथ साथ नई दिल्ली से ओपी गुप्ता साहब है, डायरेक्टर ICFAI, संजीव बिगचंदानी साहब है, फाउंडर एंड CEO इन्फो एज, और कोलकाता से हमारे साथ है प्रोफेसर आशीष भट्टाचार्य, IIM कोलकाता के। संजीव, बड़े समय से आपसे बातचीत नहीं की है, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे बदलते आलम में कोर्स की, संजीव आप सुन रहे हैं हमें? चलिए, प्रोफेसर भट्टाचार्य आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आप खुद ब खुद एक शिक्षक हैं, कि कोर्स ऐसे बदलते अहमियत में कितना बदलाव लेकर आता है पढ़ाने लिखाने में, तौर तरीकों पर। प्रोफेसर भट्टाचार्य, कनेक्शन सब कट हो गया। चलिए, कनेक्शन आपसे जुड़ा है, गोपाल साहब आप भी जवाब दे दीजिए। कोर्स का बड़ा अहमियत होता है। हम लोग देख रहे हैं कि हर साल कोर्स चेंज होते जा रहे हैं। पहले होते थे प्योरली ऑन फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. नाउ न्यू कोर्सेज आर बीइंग एडेड लाइक रिटेल,
hospitality management, media, of course, that goes without saying, and real estate. जी हाँ, और क्या टेक्नोलॉजी की अपनी अहमियत तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और टेक्नोलॉजी में एक तरीके से मास्टरी संजीव बिखचंदानी साहब की थी। Naukri.com के जरिए उन्होंने काफी कुछ कर दिखाया। संजीव, ये बताइए कि कोर्स में बदलाव जिस तरीके से आना चाहिए आपके हिसाब से आया है? देखिए, I think now with so many business schools there, business schools are responding to the environment. There is greater industry cooperation. And all the business schools I've seen, the ones I'm associated with, ones where I've gone as visiting faculty, the ones where we recruited from, I find that the courses are adapting reasonably quickly and people are talking about specialized courses, relevant courses to industry now. So I think that's happening. All right, Professor Ashish Bhattacharya, if you can hear me, अभी कोर्स में कितना आपको लगता है कि अंतर है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का? लगता नहीं है कि लगभग कोर्स जो है सामान्य होना चाहिए? देखिए, कोर्स सामान्य होना तो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि आपके स्टूडेंट्स जो आप इंडक्ट करते हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उनका जो समझने का लेवल है, उसके आधार पे आप कहाँ पिच करेंगे वो डिपेंड करेगा. Therefore, you cannot have a common course for all the management institutes. But I can tell you that in IIMs, the courses change very frequently and every faculty has the liberty to upgrade the course. And it is expected that at least 25% of the course every year will be new elements which will enter in the course curriculum, although the name might remain the same. Therefore, I think that it may not be a very good idea to have a general standard or general curriculum for all the business schools, because that will take away first the flexibility of the faculty to improve the course upon. It will take away the kind of competition we talk about between the IIMs, between the faculties, and also it will create a great hardship between the students who may not be at the same level about the students in the, let us say, top 20B schools. प्रोफेसर गुप्ता, आपके हिसाब से ICIPM के संग आप जुड़े हुए हैं, आप डायरेक्टर हैं स्कूल के, आपके हिसाब से जब आप नया एक कोर्स हर साल जब बदलते हैं तो किस चीज पर तवज्जो देते हैं? एक्चुअली क्या है, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग सो फास्ट, सो एवरी बिजनेस स्कूल हैज टू अडेप्ट इट्स वेरी फास्ट. सो वी आर हैविंग कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन विद द बिजनेस and invite business leaders to our institute and have interaction, and there is a continuous process of revising the syllabi, the course content, and in my opinion the distinguishing feature of any B school is that how quickly it adapts to the changing environment and make its courses relevant to the society and the needs of the business. चलिए, आपने कहा कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों से बातचीत करते हैं और उनसे जायजा लेते हैं, जो एक लाजमी सी बात है भाई, आखिरकार वही बताएंगे कि उनकी जरूरतें क्या हैं. आप उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं भाई आखिरकार वो उन्हें कहां पर कमी नजर आती है जहां पर आप जोर देते हैं. आप ये बता रहे हैं, हाल में आपको कौन सी ऐसी आपको लगता है कि इस वक्त यदि आप किसी उद्योगपति से बात करेंगे तो कौन सी जगह में सबसे ज्यादा कमी है जहां पर अक्रॉस द बोर्ड लगभग कहीं ना कहीं तवज्जो दिया जाना चाहिए? ऐसा है कि जैसे रिटेल सेक्टर इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी ग्रो कर रही है, मीडिया ग्रो कर रहा है, तो आप ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो भी सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड सर्विसेज सेक्टर इज रियली कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 60% ऑफ द GDP, एंड द ग्रोथ दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी is only in this sector. But at the same time, the newer sectors are emerging. Retail, for instance, has emerged in a big way, and we are expecting that in 5 years down the line, we will be expecting a lot more development in the retail sector. Realty sector has grown up and it's likely to grow. At the same time, the hospitality, the media, and so on and so forth. These are some of the sectors which are growing, and business school is keeping pace with all these developments and revising its course curricula according to the need of the society. Now, even in the traditional courses, say for instance finance, for instance,
super specialty courses have emerged. Likewise, in marketing, for instance, relationship management has developed in a big way, and companies are really bothering about whether or not the students have been exposed to the relationship management. In the finance sector, for instance, wealth management has become an important issue because managing the wealth of high net worth individual is an important issue. सही बात है सर. So courses on these lines have been added. चलिए संजीव, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जब IIMA से अपना कोर्स किया था और अब में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कोर्स कंटेंट होने चाहिए थे जो उस समय नहीं थे, लेकिन आज जो है जिस तरीके से माहौल आज उत्पन्न हुआ है उसमें उसकी अहमियत होनी चाहिए? देखिए, मैनेजमेट कॉन्सेप्ट्स हैव नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स. द कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज्ड, द रेगुलेशन हैज चेंज्ड, न्यू इंडस्ट्रीज हैव कम अप, न्यू सिचुएशंस हैव डेवलप्ड. So, I don't think there was anything lacking then for that time. I think the IIMs have adapted very well and they have introduced new courses that are relevant for today. Certainly post 1991 with liberalization, a lot of course content became obsolete all of a sudden. And when regulation changed very fast. But I think people have adapted very well and it's fine now. थैंक यू वेरी मच संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज जुड़ने के लिए. ब्रेक का एक और समय आ गया, लेकिन सवाल अभी भी काफी ज्यादा बाकी हैं. सबसे पहले सवाल तो ये है कि at a time when the industry is facing a resource crunch, how do B schools face the industry? और इससे बाद अंत में हम एक और अहम सवाल उठाएंगे कि आखिरकार इस समय ज्यादा मुश्किल क्या है ढूंढना, एक अच्छा टीचर या एक अच्छा स्टूडेंट? ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश, जहां पर हम 20 स्कूल्स को रैंक कर रहे हैं. रैंक में नंबर 1 पर आए हैं IIM अहमदाबाद, नंबर 2 पर IIM बेंगलोर और नंबर 3 पर IIM कोलकाता. जाते जाते हमारा एक अहम सवाल आज के माहौल में जो हम प्रोफेसर से पूछेंगे, इज इट मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड स्टूडेंट और अ गुड टीचर? लेट्स स्टार्ट विद यू मिस्टर गोपाल. Well, finding a good student may not be very difficult these days. Finding a good faculty is extremely difficult, mostly for the institute. Prime reason being that the management institutes, even the private management institutes, do not pay. The compensation do not match with the corporates. And in spite of some innovative ideas, like in IIM Ahmedabad, they give a 2 years leave of absence. They allow them to do consultancy business. Still, the gap is so much that this needs to be brought in closer and closer. प्रोफेसर भट्टाचार्य, बड़ा ताज्जुब की बात है कि जो क्षेत्र इतने करीबी से आज के व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यापार की इतनी ज्यादा जरूरत है अच्छी शिक्षा की, और शिक्षकों को अच्छी तरीके से पैसा नहीं दिया जाता. क्यों ऐसी अनोमली, क्यों आपके हिसाब से? देखिए, ये एनोमली केवल भारत में ऐसा तो नहीं है, ये विश्व के हर जगह है और ये एनोमली चलता रहता है. और हमें ये भी देखना चाहिए कि जॉब प्रोफाइल क्या है. जब हम शिक्षक हैं तो हम एक काम में आते हैं जहां अपनी खुशी से हम आते हैं और हमें अपनी खुशी का काम करना पड़ता है, काम मिल जाता है रादर, हम ये कह सकते हैं. और जबकि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ के थ्रू से जाना पड़ता है. तो इसीलिए हमें लगता है कि इस तरह का जो है कंपैरिजन बहुत अच्छी बात नहीं होगी. लेकिन मेरे हिसाब से एक तो कॉम्पेंसेशन की बात है ही है कि कॉम्पेंसेशन में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मॉनिटरी अगर मोटिवेशन है तो लोग इंडस्ट्री में जाना पसंद करेंगे. एक बात और भी है कि हम देखते हैं अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि आपको रिसर्च कंप्लीट करना पड़ता है. तो आप जो है केवल ग्रेजुएशन के बाद 2 साल MBA करके या ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. तो वो लंबी पढ़ाई करने में भी काफ़ी मजबूरी लोगों को होती है कि कितनी लंबी पढ़ाई हो सके और उसके बाद कैरियर कैसा बने. तो ये काफ़ी सारे बातें हैं जिसकी वजह से शिक्षक नहीं मिलते हैं. लेकिन हमें लगता ये है कि इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे और शिक्षक आगे मिल पाएंगे, ऐसा उम्मीद लेके ही मैं बैठा हूं और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. और दूसरी बात यह है कि हमें ये भी जानना चाहिए कि स्टूडेंट शिक्षक रेशियो में थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम शिक्षक से ज्यादा छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए वो भी हमें ढूंढ निकालना पड़ेगा. चलिए गुप्ता जी, जाते जाते आप भी जरा जल्दी बता दीजिए कि इस वक्त ज्यादा मुश्किल क्या है, एक अच्छे स्टूडेंट को पाना या अच्छे शिक्षक को पाना?
मैं भट्टाचार्य जी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अच्छे स्टूडेंट तो आ ही रहे हैं, अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, और भट्टाचार्य साहब ने जो इशू रेज किया वो बिल्कुल सही है. वर्ल्ड ओवर compensation by the industry is always higher than the compensation by the university because the job content are quite different. But at the same time, this difference in India is quite high, in spite of the fact that over the years the payments have increased in the university system also. And hopefully, after the private sector have come in, the payment is likely to increase. Ji. IIPM, for instance, is making good